नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्सिम सिन्हा आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या मतलब आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो इट्स अ स्मॉल अटेम्प्ट बाय मी टू शेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट concepts of defense and strategic studies, which are very much important from UGC NET and other various defense exam perspective. Okay. So in this video I'll be going to discuss about 10 to 12 questions, okay, thoroughly, and by the end of the video you will be enlightened on many numerous important concepts about which you were not aware of before watching the video. Okay, so let us start with the first slide. Here the question is, which of the following countries had built the Barlev Line linear defense during the Arab-Israel War of 1973? I hope all of you are aware of the conflicts that had happened in the previous century in the Middle East. Okay, among those kinetic conflicts, Arab-Israel War was one of them. Okay, so यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे इन्होंने पूछा कि बार्लेव लाइन लीनियर डिफेंस ये मतलब कौन से देश के साथ जुड़ा हुआ है. The answer is Egypt. Barlev line of defense was a chain of fortification built by Israel along the eastern bank of Suez Canal. Okay, I hope you can imagine where the Suez Canal is. Okay, so it is situated in the along the eastern bank of Suez Canal shortly after 1967 Arab-Israeli War. मतलब ये अरब-इजरायली वॉर जो पहले जो हुआ था 1967, उसके बाद ही इसको बनाया गया था बार्लेव लाइन. ठीक है, तो the correct answer is Egypt. Okay, so moving on to the next slide. Okay, the next question is, which of the following organs takes a decision for defense and security at highest level in India? The options are Chief of Staff Committee, Political Affairs Committee, National Security Council, and Cabinet Committee on Security Affairs. And the correct answer is yes, National Security Council. Actually, the National Security Council is a recent one and it was established in 1998. Okay. अभी मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ जिसका जवाब आप लोगों को पता ही है, और आप लोग ज़रूर, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में देखे जाएंगे. हु इज़ द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ? ठीक है, सो I hope all of you are aware of the answer and I am expecting you to share the answer in the comment section. Okay, now moving on to the next slide. Yes, which one of the following countries was involved in mediator between LTTE and Sri Lanka? Options are USA, India, Britain, Norway. Okay, now what is LTTE? Sri Lanka is a country which we know is our neighboring country, and LTTE, it's a Liberation of Tamil Tiger Elam. Actually, it was a terrorist outfit based on Sri Lanka. Okay, it was operating inside Sri Lanka and it was creating a lot of mayhem inside the country. Okay, and Indian Army had also launched an operation named Operation Pawan. Okay, it was mainly peacekeeping operation. Okay, so I think that's a different story. I will definitely take a class on that in our forthcoming session. So far this question is concerned, so which country acted as a mediator? And many of you might think that answer is India, but no, it's not India, it's Norway. Yes, the answer is Norway. Okay, isn't it interesting? Yes, it is very much interesting. That's why I have chosen this question. All right, so moving on to the next slide. Yes, now this is very much interesting. Which one of the following is not a part of Navratna PSUs of Defense of India? Okay, PSU means, I hope all of you are very much aware of it. Okay, actually the answer is very much simple from the options. ठीक है, आपने जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से बहुत सिंपली यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं. नवरत्न PSU जो होते हैं ज़्यादातर यहाँ पे ये डिफेंस सेक्टर के लिए काम करते हैं. ठीक है, ऑप्शन में भी दिया गया है डिफेंस इन इंडिया. सबसे पहले यहाँ से ऑड वन आउट अगर हम लोग करने जाएँ, ठीक है, तो यहाँ हॉल तो बिल्कुल नहीं होगा. इट इज़ प्राइमरली मेंट फॉर डिफेंस ऑफ इंडिया, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड. बाद में आपका गोवा शिपयार्ड, ये भी इंडियन नेवी के लिए काम करता है, तो ये भी नहीं होगा. BEML
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये भी नहीं हुआ. सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज. सो दिस इज नॉट ए नवरत्ना PSU, एटलीस्ट वर्किंग फॉर डिफेंस ऑफ इंडिया. ओके, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, here we have three brilliant questions. Who among the following coined the word cyberspace? The options are William Gibson, Adam Roberts, Ban Ki-moon, Robert McNamara. And many of you might think the answer is Ban Ki-moon. Okay, but no, the answer is not Ban Ki-moon. It is William Gibson. William Gibson was the person who coined the term cyberspace. Okay, ठीक है. Now moving on to the next question. India had procured AWACS from which one of the following countries? AWACS, क्या होता है? AWACS एक आपका मतलब एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है. एंड AWACS इज एन एक्रोनिम. द फुल फॉर्म ऑफ AWACS इज एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जो एयर टू एयर ऑपरेशंस में बहुत मतलब काम आता है. ये हाल फिलहाल में मतलब ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, उस दौरान हम इंडिया ने पाकिस्तान के आई थिंक 1 या 2 AWACS को ठोक डाला था. I hope all of you are aware of it. So here the answer is, and many of you might think the answer is USA. No, the answer is Israel. India has procured AWACS from Israel, especially the Falcon AWAC. ठीक है, तो इजरायली जो AWAC है उसका नाम है Falcon AWAC. Falcon F वाला नहीं, PHALCON, Falcon AWAC. Okay, now next question. India is said to have the largest deposit of, options are radium, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम. सच पूछो तो जब मैंने भी पहले ऐसा सवाल सुना था तब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया था. लेटर ऑन आई रिसर्च्ड ऑन दिस क्वेश्चन एंड द आंसर टर्न आउट टू बी थोरियम. यस, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम, अराउंड 25% ऑफ एंटायर वर्ल्ड्स रिजर्व. ओके, मतलब पूरा दुनिया का 1/4 थोरियम हिंदुस्तान के पास है, ठीक है. Okay, moving to the next slide. Yes, which one of the following is not the characteristic of guerrilla warfare? Guerrilla warfare यानी कि हिंदी में छापामार युद्ध बोलते हैं, जो आप लोगों को पता ही होगा. और आप लोगों को तो ये भी पता है कि guerrilla warfare किसने पॉपुलराइज किया था? Yes, it was popularized by छत्रपति शिवाजी जी महाराज, ठीक है. छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये शुरू किया था. बाद में उन्हीं के इस मतलब परंपरा को तात्या टोपे जी ने बहुत आगे तक लेके गए थे. लेकिन शिवाजी महाराज जी वॉज मेनली नोन फॉर दिस गुएरिला वारफेयर, छापामार युद्ध. एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिगार्डिंग पर्टेनिंग टू गुएरिला वारफेयर इज दैट वियतनाम वॉर जब चला था, ठीक है, सबसे लंबा युद्ध चला था. वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनामियों ने US फोर्सेस को गुएरिला टैक्टिक के थ्रू ठोका था, उन लोगों को हराया था, ठीक है. तो आई थिंक वियतनाम वॉर ख़त्म होने के बाद हाँ उनके एक आर्मी चीफ इंडिया आए थे, आके वो बोले थे कि मैं शिवाजी महाराज जी का जो समाधि स्थल है वो देखना चाहता हूँ. तब उनसे पूछा गया था क्यों, तब उन्होंने बोला कि बिकॉज वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, इट इज़ ही हु इंस्पायर्ड अस टू फाइट अगेंस्ट ए माइटी एनिमी लाइक USA, ठीक है. सो सच वॉज द इम्पैक्ट ऑफ शिवाजी महाराज ऑन आर on global platform, ठीक है. Okay, now coming to this question, the options are mobility, surprise, offensive action and taunt the enemy to destroy the discipline. देखिए आप यहाँ पे गुएरिला वारफेयर जो था इसका जो खासियत जो स्पेशलिटी क्या है? सरप्राइज. तो ऑब्वियसली सरप्राइज यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, जो कि बोला कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, तो सरप्राइज नहीं होगा. अच्छा, सरप्राइज के साथ और क्या होता है? गुएरिला वारफेयर इज ऑलवेज ऑफेंसिव इन नेचर, दुश्मन के दिल में दहशत फैला देता है. सो ऑफेंसिव भी नहीं, ऑप्शन सी भी कट गया, रह गया आपका A and D. मोबिलिटी एट इट्स पीक, गुएरिला वारफेयर मोबिलिटी बहुत मतलब हाईएस्ट पैरामीटर होता है मोबिलिटी, मतलब बहुत स्विफ्ट मूवमेंट होना पड़ता है, ठीक है. तो ऑप्शन ए भी नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली द आंसर इज ऑप्शन डी, टॉन्ट द एनिमी टू डिस्ट्रॉय द डिसिप्लिन, ठीक है. ओके, सो एमसीक्यू में क्या होता है कि आपका ऑड वन आउट जो है ये एक बहुत ही मतलब यूज़फुल टूल होता है, इसे करके आप काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. या दिस एन इंटरेस्टिंग वन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट chronological order in terms of their inception?
SEATO, NATO, ANZUS, OAU. Okay, to start with NATO first. NATO stands for North Atlantic Treaty Organization. Okay, it was established in the year 1949. ठीक है, उसके बाद आता है chronologically if we are speaking, since the question is about chronological order, so after NATO comes ANZUS. ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस को लेके मेनली बनाया गया. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका आता है सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, which was established on 1954. ANZUS was in 1959, SEATO was in 1954, then comes OAU, Organization of African Union, which was established in the year 1963. So the correct chronological order is NATO, then ANZUS, then SEATO, then OAU. So the correct option is C. Okay, now coming to the next one. Yes, here it is. Tanks were the first used by British against Germany in one of the following battles. अब कौन से बैटल में जर्मनी ने फर्स्ट यूज्ड बाय ब्रिटिश, ओके सॉरी, अंग्रेज़ों ने जर्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया था. ठीक है, टैंक को पहली दफ़ा. So the options are Battle of North Africa, the Battle of Gazala, the Battle of Somme, the Battle of France, and the correct answer is Battle of Somme. It was in 1916 during the First World War. The tank armored movements were introduced. Okay, moving to the next question. Yes, here it is. This is an interesting one. Match the following Secretary Generals named in Table 1 of UNO with their respective native countries in Table 2 with the help of their code given below. Okay, so यहाँ पे पूछा गया कि जो UN सेक्रेटरी जनरल्स जो थे उनके मतलब कौन किस किस देश से ताल्लुक़ रखते थे, यहाँ पे पूछा गया है. ठीक है, ओके. The first option is Trygve-Lie. ठीक है, Trygve-Lie, then Yuthant, then Kurt Waldheim, then Gladwin Jeb. Okay, so Trygve-Lie was from Norway. He was a Norwegian gentleman. Okay, after him was Yuthant. Yuthant आपको नाम से पता चल गया होगा कि Yuthant was from Burma. He was a Burmese gentleman. There comes Kurt Waldheim. Okay, by the way, Yuthant was the first non-Norwegian UN Secretary General, because prior to him, all the Secretary Generals of UNO were Norwegian. Okay, so option C, Kurt Waldheim. Kurt Waldheim was an Austrian gentleman, and the last, Gladwin Jeb, was a British. He was an English gentleman. So the correct option is A4, B2, C1 and D3, and the correct option is D. Okay, last option is the right one. Okay, moving on to the next one. Yes, the last slide. Match the following authors with their respective books. Use the code given below. Henry Kissinger, then S. Brown, Hans J. Morgenthau, then J. Coates. Okay, so आप लोग हेनरी किसिंजर साहब को तो पहचानते ही होंगे. He was a famous American diplomat. Okay, he passed away I think in 2023, I guess. Yes, at the ripe age of 101. Okay, so he lived a century almost. So Henry Kissinger wrote the book named Diplomacy. Okay, and then and Hans J. Morgenthau has written the book Politics Among Nations. Okay, so automatically A2 and C हुआ आपका 1. ठीक है, and S. Brown has written the book The Causes and Prevention of War. ठीक है, and A.J. Coates wrote Ethics of War. So far I feel A.J. Coates was associated with just war theory. Okay, I'm not sure, might be, but my rough memory says this. Okay, so anyways, the correct option is R2, B4, C1, D3. So the correct code is option B.
ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो अगले क्लास में हम लोग नया कुछ और देखेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बाय, जय हिंद।